start, My sir? yeah, you can start now. Okay. Uh, a very warm good morning to everyone present here. I, Saurav Kumar Singh, Yeah, behalf of entire Hey Foodie family, welcome you all to the chat show. Today, we have a very special guest, Mr. Tanveer Ahmed. Mr. Tanveer Ahmed is the director of MMK High School, Ranchi. He is running 11 schools in Odisha, Bihar, and Jharkhand for over 40 years. He has given education free of cost to many of the children. He has been awarded with many awards like Global Education Award, Birsa Munda Ratan Award, Justice P.N. Bhagwati Award, Guru Samman Award, awarded by our former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, and many such has been awarded to him. And his research over more than 50 papers have been published in national and international journal. Once again, I welcome you, sir, to our chat show. thank you, thank you, And thank you. and to take this chat show further, I would now request our host Madhumita. So Madhumita, over to you. So meanwhile Madhumita joins, I would like to ask few questions. Okay. So according to you, what is the definition of healthy food? Actually, healthy food is a very important part of our life. Really, nutrition is the basic need of the living organism. Every organ, not for the man or animals. Every organ, like the insect to the up to higher animals, like this, the man is also. Healthy food. This is the point of the healthy means how much calorie we have this need. Number one. Number two, how much protein we have need in this our body. These all are the important component like the carbohydrate, how much carbohydrate we need to eat. These all are the important factor for these are foods. Actually, when we will discuss about the healthy food, that means suppose one egg, 263 calories in this one egg. That is the important for us in the whole day. In the 24 hour, when we will take the one egg to this our body, that means they will recover the total calories of our body. But another thing, when we will discuss it, ki why carbohydrate need, that is the important for our bodies. Ki when we will not take the carbohydrate, that means ki they have the requirement of this, the stomach, intestine, and body parts, and so many things. So that is the need of this body. So healthy food means ki you need to use the protein, carbohydrate, vitamins. These all are the things. They are the important, and you can take this the vegetables, meats, milk, eggs, and also you can use this the some roges and fruits is also. Okay. So according to you, is healthy mind and healthy food interlinked with each other? Yeah, obviously healthy mind is the very important because ki, when we will not take the healthy food, we can't expect mind will be the develop. Now suppose nutrient part of the living organism. Already I have been told you. Actually, when we will discuss about the nutrition, that means ki nutrition they will every part of our body, like this the bones, like the blood, like the muscles, like the brain is also. So obviously एक healthy food में healthy brain develop होता है. जी. सर मतलब आजकल जैसे हम लोग देख सकते हैं इम्यूनिटी बिल्डअप बहुत ज़रूरी है किसी भी मनुष्य के शरीर के लिए तो ये और एक ये बड़ा चैलेंज भी बनता जा रहा है तो आपके हिसाब से सर मतलब कोई भी इंसान अपना इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है व्हाट आर द डिफरेंट वेज This is the very good question. Actually, now in this time, the total different scenario of our body and concept is also. Number one, so much parents they give the children like the not a healthy food. They are the fast food they are using for the quick work, and suppose some noodles, some soup, some different types of things. They are known about that. Suppose last few years back, one company have been the banned due to the acetylglutamide. They have been the too much inside that noodles is there. I will not discuss the certain controversial thing. But question is here ki when you will go to the market and you can use the some noodles, how much they are using the acetylglutamide. That is this is very important. So healthy food is the very important part, and when this is the system. First system is ki firstly you will take the breakfast.
Breakfast means you have need to use some eggs, some potatoes and bread and cheese and butter. These all are the important parts. In the morning you can take this the breakfast, and then you will take the lunch, and after the in the evening you can take the snacks, and the before that sleep you can use this the also dinner. So these all are the factors. These all are the things you can use in the different time level. A body they have required in the timely. Suppose when you will take the 7 or 8 o'clock in the morning breakfast, obviously you have been required to the 12 and 12 2 o'clock. Between this you can take the lunch, and 4 or 5 you can take the snacks, and also before the 9 o'clock to the 7:30 to the 9 or 9:30 you can take this the dinner also. This is the system. And when you will taken the systematically anything in the food or lunch or breakfast and snacks, so obviously your body will be the grow up too much immune system is there. Exactly. It's very nice to hear it from you, sir. So I think Madhumita is here. Madhumita, can you hear me? Hello. Yes. Yeah. Uh, Madhumita. Yeah, Madhumita, kindly tap on audio once. Ah, you're not audible, Madhumita. Okay, no issue. Saurabh, kindly continue. Sir, meanwhile, we got a question. Sir, what would you suggest students to eat on a daily basis? Obviously this is the very important part, because these all are the backbone of our country, the students we are discussing about it. Actually, when we will not give the healthy food now, so obviously the scenario or the age description will be that too much low. Number one, I suggest to the students milk is the very important part for that. Number two, when they are the non-veg or vegetarian, so if you are the non-veg, every day they will take the one egg. This is the very important in the breakfast. This minimum two things is the very important. When you will take this the bread or sliced bread, that will be the high carbohydrate, but the milk and egg is the very important for the growth of the body, and also the too much build up the bone is also during the from the third to 16 year. This is the body growing age. So this time is the too much important for the every students. And also when they will take the lunch, so lunch will be the too much high, because during this the breakfast and lunch period is a too much distance. During this the tiffin hour in this school, this is not important. Only they will take the one or two sliced bread, or the bread is also, and some vegetables or sabji is there. But in when they will take this the lunch now, so lunch will be the very higher, like the proteinous, like this the vitamins, like this the salad is also important in the during that time. Tomato is also important for this the food. These all are the build up the body for the growing age. Uh, वेरी गुड सर वी एट हे फूडी हमारा सर ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब हे फूडी प्रोवाइड्स घर का खाना एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड वी आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन द सोसाइटी की हाउ मच इम्पोर्टेंट घर का खाना इज फॉर यू मतलब हाउ मच द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड वी आर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस तो सर आपके हिसाब से सर क्या अच्छा है घर का खाना या रेस्टोरेंट का खाना व्हाट वुड यू प्रेफर This is the very good questions. Actually घर का खाना की बात करें या बाहर के खाना की बात करें, जी खाना खाना होता है, बट उसके दूसरे फैक्टर पे हमको आपको आनी होगी. First of all, when you will go to the restaurant, what is the hygienic system is there? Number one, जिस plate को when we were use that plate, that is the hygienic, yes or not? In which place they are the washing in that time? When you go before that the hotel or restaurant, so you can watch it कि every plate के जो disposables होते हैं, they will put up in that side, and they are having the bacteria or fungus, they will grow it. Suppose it will be the not a wash in the properly, or when we will take the food in that plates, obviously we will suffer from the some diseases. In the whole house, घर की food की बात मैंने की, जो है food promote I am doing this work for the
एक्चुअली घर का जो फूड होता है दैट इज द मेड अप बाय द ओन मम्मी, दे विल द मेकअप, दादी दे विल द मेड इट. The question is here कि suppose कि every day they will use the some vegetable, this is the important in this time, this is the spinach is important in this time, this vegetable is important in this time. So they knows very well very well about this, that in which time we will give the very good food to them. So that is the very important. So I will prefer to every person, not the myself, yourself, or the any. Every person of the world, not India, every person of the world, this is important. Everybody healthy food from the own home. That will be too much better for you. And in that place, you can use this good oil. In that place, you will use good milk. In that place, you will good vegetarian. No, you will wash the vegetables. Everything in that the house is very important. So there was something these types of work in this with the help of this the mummy कि वो obviously वो साफ करके देंगी, हाइजीनिक बना कर देंगी, प्रॉपर कुकिंग करके देंगी, जो नीडेड है उसके वो उन सारी चीजों को देंगी. तो obviously I will prefer to the homemade food is very important for the hygiene and also the build up of immune system. Very good. Sir, according to you, what is more important, physical health, mental health, or social health? This is the very tremendous question. Physical health, mental health, and uh, Social health. and another one is the social health. Social health. Actually, social health, physical, mental, and social. This is the correlation to the each other. Number one, because mentally health will be not a good. That's we can't do the anything in the society. We can't do in the any family. So mentally health is the very important. Now mentally health, when it will be developed, when you will take the good food, when you will take the hygienic food, when you will take the proper carbohydrate, protein, vitamins, these all are the important part inside the body. Then after you will build up the mental, and then mentally you will be the developed. Obviously physical part of the body is also developed, and mentally and physically both they are the correlate with each other. Definitely the society build-up is too much high. अगर हमारे हम हर एक व्यक्ति मन से स्वस्थ है, माइंड से स्वस्थ है, शरीर से स्वस्थ है, तो हम स्वस्थ हैं, हमारे बगल के लोग स्वस्थ हैं, तो ऑब्वियसली सोसाइटी भी स्वस्थ हो जाएगी. तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोरिलेट है. बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कहा आपने सर. सर, जैसा कि हमने आपके बारे में जाना कि आप मोर देन 40 इयर्स से सर आप एजुकेशन फील्ड में एज अ टीचर एंड प्रिंसिपल हैं, एंड आपने इतने सारे स्टेट में आपके स्कूल हैं. सर, आपका एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को लेके इन टर्म्स ऑफ फूड अगर मैं पूछूं कि जैसे होता है सर कि स्कूल में हम रहते हैं एज अ प्रिंसिपल या टीचर, तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फूड के चलते कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं सर. तो इसमें आपका कुछ कोई एक्सपीरियंस रहा हो तो अगर आप शेयर करना चाहें. बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहूंगा. कई जगह पे मैंने खुद भी वॉच किया है इन सारे चीजों को कि कई स्कूल्स के बच्चे जब छुट्टी होता है तो वो टिफिन को फेंक देते हैं. मतलब बस में so many times I asked why this. Most of the students they told me sir, actually this is the traditionally tiffin they are given to us, like the aloo ka bhunjia, like the chowmin, like the some simple types of things they are using every day. The amount every day will be the same, so why they will take it? So family is too much responsible for the food item, because when they will not change the taste for the everyday, obviously. So I give the session to the parents also. When those children they will change the good food and change that taste of this. That tongue is also very important. So they will change the system कि वो उनका टेस्ट भी चेंज हो और वो दूसरे तरह का हर दिन एक फूड खाएं जिनमें उनके अंदर समझ हो कि भाई मेरे को ये चीज अच्छी लगी, आज वो चीज अच्छी लगी, वो चीज अच्छी लगी. एंड देन पेरेंट इज आल्सो नोइंग कि नो my child they want it ki this vegetable is very good and bread is very good, butter is very good, so they can use it. Exactly sir, fresh food is very important and changing the taste every day will
agree with the interest. हम हर दिन चेंज कर करके अगर बच्चों को नया खाना देंगे और उसमें अगर प्रोटीन भी रहेगा तो सर कितना Obviously, अच्छा रहेगा, नहीं? obviously, सर, they will make the जी routine of that the diet for the 7 days. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर. सर, योगा सेहत के लिए कितना अच्छा है सर? ये अगर आपके Wow, शब्दों में सुनने मिले तो very बहुत अच्छा लगेगा. bilkul. Firstly, I will thanks to the Prime Minister of our country, Modi ji. They have decided 21st of June. This is the Yoga Day, and this is given by this our country. We are too much proud to this the our country and also the Modi. Actually, yoga. Last 35 years I am doing the yoga. Number one. Yoga, when you use the Vajrasan, that means Vajrasan, they will give that too much, solve the digestion problem. This is the very important. When you will use the Virchasana, that means that you can balance to this the bodies also. When you use the Chakrasana, that means that the stomach pain and stomach जो बाहर निकल जाता है, they can control it. So yoga is the very important part. We can't do the मतलब अगर आपने योगा नहीं की है लाइफ में और आप योगा नहीं करते हो तो मैं बता दूं कि आपका जो है फिजिकल और मेंटल बूस्टअप कभी हो ही नहीं सकता. I give the some example to the student is also. Every student is also कि so many students they don't learn the मतलब they don't want to the studies या उनको याद नहीं होता है क्वेश्चन आंसर. तो I give the some suggestions कि when they will do the every day 2 or 3 minutes शीर्षासन मतलब सिर से खड़े होकर अगर you can support the wall is also. So when they will do the 2 or 3 minutes शीर्षासन, that means कि definitely the memory power will be the build up because our blood circulation of this body from the head to leg continuously flow on and who's not in the area having your blood circulation will be the too much high and when you will do the every day 2 or 3 minutes definitely your remembering power will be the too much high. So I give the session not a students, ladies, gents, old age, lower age, everybody can do the yoga. Important to this our body. Yeah, very good, sir. Thank sir, it was very nice hearing of you. Sir, now I would like to open the forum for our audience. So, audience, you may ask your question directly to sir, or you can drop it in the chat box. Sir, we got one question from Afreen. She's Yeah, asking, what is healthy eating yeah. all about? Is it about eating quality of food or quantity of food? Quality of food is the very important and also the quantity. Quality of food, why quality of food? Suppose ki when you will take the too much high diet to the body but quality is not good, that is not a good for me. So quality and quantity is the both are the very important ki when you will take the quality and also take the good quantity of this the food for the body because ki you will take the too much high quantity of the food that will be the harmful for you. Free. Hope Afreen, you got the answer. Sir, she's asking, can you mention some food that contribute in building immunity? Obviously, milk is very important. Meat is very important, and vegetables like this the papaya, like the tomato. These all are the very important. Girls is also important when they will take the tomato. They are having this too much high iron is there, so that is the very important for that body because in the girls having the hemoglobin is the 9 to 11 and male having is the 11 to 13 or 14. So obviously the requirement of this the iron is very important part. So they will take the meat, they take the eggs, they take this vegetables, they take this the bread, the rice is also for the carbohydrate and avoid this the something like the pizza
like this, the noodles, like the pasta, they are having only carbohydrate is there. So when you will take this now inside the body, the carbohydrate they will be fulfill, but the vitamins, the like the proteins, they will be the absence in that part. So every day they, when you will consume, so it can maybe happen eyes problem, muscles, wrinkles problem will be the grow up. Oh, yes, sir. Sir, we have got one question from Anand, sir. He's asking, sir, Yeah, can you share your yeah, yeah. school days story related to tiffin? Yeah, yeah. School day related to tiffin is the very interesting time because student they are the too much wait for the tiffin hour because during that time most of these students they are the sharing to the each other. But senior student they wanted ki firstly when bell of this the tiffin they will go to the pre-nursery and prep classes because they wanted ki now ki in that child they will bring the good food item and they will take the some food and they will give the वो खिलाते भी हैं और कुछ उसके टेस्ट भी करते हैं तो girls they are the too much naughty they will go to the class of the lower classes and they will stare the smiling and also they are the liking to the small child is children also liking to that senior students and they will give to the each other and they will do the interesting time is that time I feel it they will share the tiffin and girls senior girls is also they will give the tiffin to them but they are the too much worried in that day which types of tiffin they are given by this the mummy of that students so they are the very interesting times I feel it that is too much good. सर सर आई हैव गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू. जैसे कि एक ऑडियंस ने हमसे पूछा है कि सर आज जैसे फ्रेंडशिप डे है और आप टिफिन से रिलेटेड अपना कोई ऐसा किस्सा बताइए अपने दोस्तों के साथ जो आपको अभी तक याद है स्कूल डेज का. फ्रेंडशिप डे के बारे में मैं क्या बताऊं कि मेरे जितने दोस्त हैं मैं अपने दोस्तों के बारे में बता दूं मेरे जितने भी दोस्त हैं स्कूल से लेकर अब तक के जितने भी पढ़ाई के जब मैंने स्कूलिंग किया जब मैंने ग्रेजुएशन किया जब मैंने एमएससी किया जब मैंने पीएचडी किया जब मैंने मास कॉम किया एलएलबी किया बीएड किया बहुत सारे पढ़ाई करने के दौरान जितने लोग भी रहे नंबर वन की 97 में मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड बिहार के गवर्नर से दिया गया था अखलाक रुमान किदवई जी से और so many times I have been got the awarded from the different ministers or chief minister or governors लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर मेरे कामयाबी में किसी को खुशी होती है तो वो मेरे दोस्तों को होती है एंड टिल डेट टू दैट टाइम टू नाउ इन दिस टाइम मैं बताऊं कि वो सारे लोग कई आईएएस हैं आईपीएस हैं कई इंडियन फॉरेन सर्विसेज में हैं कई डॉक्टर्स हैं कई इंजीनियर्स हैं but they all are the attached with me and they are very happy ki Dr. Tanvir they are doing the very good work for the students and definitely there's somebody they're the every time they're the appreciating to me and convey to the every time ki Tanvir you are very good और यादगार पल के बारे में बात करूं तो यादगार पल दोस्तों के साथ हर पल होता है पर्टिकुलरली मैं कहूं कि दैट टाइम इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं फॉल पे गया था मैं नहाने गया था मैं ये करने गया था अगर आपके सच्चे दोस्त हैं तो हर पल आपको वो पल उसका याद आता है और मेरे लिए उनका भी उनके साथ बिताया हुआ हमारे जितने भी दोस्त हैं मैं एक पर्टिकुलर दोस्त का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि सब लोगों ने मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार किया है काफी अच्छे तरीके से हो रहे हैं काफी कोऑपरेट किए हैं उस समय भी स्कूल के समय भी और आज के समय में भी काफी कोऑपरेट करते हैं और दे विल रिस्पेक्ट टू मी अगर वो कोई हमारे से जूनियर्स हैं तो वो रिस्पेक्ट करते हैं बहुत सारे बॉलीवुड में डायरेक्टर्स हैं बड़े बड़े वो डायरेक्टर फिल्म वो बना रहे हैं दे ऑल आर द जूनियर्स बट अब नाउ इन दिस टाइम इज आल्सो दे आर कि भाई तनवीर भैया आप यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क और अप्रिशिएट करते हैं दे आर रिस्पेक्ट टू मी और जूनियर्स हो चाहे सीनियर्स हो हमारे जितने भी दोस्त रहे हैं दे ऑल आर वेरी गुड एंड थैंक टू दिस गॉड कि दे आर गिवन द वेरी गुड फ्रेंड टू मी. Okay. So, another question someone is asking, sir, are you foodie? What is your favorite food item? My wife so many times they are asking about me कि भाई which types of thing you like it. मैंने कहा है कि हमारे देश में जो भी होता है और जो खाने के लिए है मैं उसे खाता हूँ. Actually, this is not a my personal thing is the very important कि I like to the Hispanic, I like to the मुझे सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन उसमें जितनी भी चीजें हमारे देश के अंदर में जो हम लोग खाते हैं
वो सारी जगह पे की चीजें मुझे अच्छी लगती है। 2-4 बात बताऊं कि मैं पर्टिकुलर कह दूं कि मुझे एक चीज अच्छा लगता है, हमारे देश में बायोडाइवर्सिटी है, 1654 डायलेक्ट्स हैं, 16 लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे कल्चर ट्रेडिशंस हैं। सबके ट्रेडिशन को जानना, सबके कल्चर को जानना, सबके खाने पीने को जानना। मैं चूंकि झारखंड में रहता हूँ, झारखंड का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है हमारे इंडिया के अन्य भागों से। तो दैट मीन्स कि मैं पर्टिकुलरली मैं कुछ ना कर कुछ कह नहीं पाऊंगा इस पे कि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। प्रॉपरली जो डाइट होती है वो मैं डाइट लेता हूँ, और काफी हेल्दी डाइट लेता हूँ। और खुद भी मैं परचेजिंग करने जाता हूँ वेजिटेबल्स, मुझे अच्छा भी लगता है। सो आई फाइंड इट कि भाई व्हाट इज द गुड, व्हाट इज द बैड, एवरीथिंग आई सर्च इट इन दैट प्लेस, एंड देन आफ्टर वी मैं वैसे फूड्स को लेता हूँ और मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरा चूंकि आपने पूछा फेवरेट क्या है, तो मुझे एग बहुत पसंद है और मैं अंडा खाना बहुत पसंद करता हूँ, और वेजिटेबल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं वेजिटेबल्स भी बहुत लेता हूँ। जी। मीट वगैरह को मैं अवॉइड करता हूँ, और ये एग और मेरे लिए वेजिटेबल्स जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। सर, जैसा कि हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि आप बहुत एक स्पोर्टी पर्सन है एंड यू लव क्रिकेट, सो कैन यू टेल समथिंग अबाउट इट? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे परिवार में मुझे दो चीज सिखाया गया और मेरे घर के सारे लोगों को सिखाया गया, खेलो और पढ़ो। दूसरा, मेरे को नौकरी नहीं करने के लिए कहा गया है हम लोगों को, और बोला गया कि खेलो और पढ़ो। और हमारे सारे परिवार के लोग स्पोर्ट्स पर्सन है। हमारे जो फैमिलीज हैं उसमें हमारे बड़ा खानदान है, तो उस फैमिलीज में मोर देन 40% के जो जॉब्स हैं वो फुटबॉल से लगे हैं, मतलब जॉब हम लोगों को फुटबॉल से मिला है। और क्रिकेट के बारे में कह दूं कि क्रिकेट धोनी के सहारे से हूँ, धोनी मेरे करीब के हैं, और कई बार बातें होती है, कई बार अच्छी अच्छी क्रिकेट की बातें होती हैं। लेकिन क्रिकेट के प्रति मेरा जो शौक रहा है वो काफी अच्छा रहा है। मैंने इंटर कॉलेज में अप टू इंटर कॉलेज मैंने फाइनल में मैंने हारा कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर से 94 में, और मेरा ईस्ट जोन में सिलेक्शन भी हुआ, बट मुझे हायर एजुकेशन पे जाना था तो मैंने जब प्रेफर ज्यादा नहीं किया इसको, क्रिकेट को। लेकिन मैं क्रिकेट काफी अच्छा खेलता हूँ, और सौभाग्य की बात है कि जब भी मैंने अपने एरिया के क्रिकेट में खेला है तो मैंने बॉलिंग किया है, मैंने बैटिंग किया है, मेरा ऑफ शॉट बहुत अच्छा है, स्क्वायर शॉट बहुत अच्छा है, मैं बॉलिंग फास्ट बॉलिंग करता था, और मैं आज भी करता हूँ बॉलिंग वगैरह। जब भी बच्चे खेलते हैं तो बोलते हैं सर कि आपके बैटिंग की स्टाइल से नहीं लगता है कि आप इतने एज के बाद भी इतने अच्छे से खेलते हैं और इतने अच्छे से बॉलिंग करते हैं। तो क्रिकेट मेरा पसंद का चीज है। मैं फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलता हूँ, और मुझे इन दोनों खेलों से हटके जो खेल बहुत ज्यादा पसंद है वो आई एम ए गुड प्लेयर ऑफ द बेसबॉल। तो मुझे बेसबॉल भी बहुत अच्छा लगता है। अमेरिकन क्रिकेट है बट दैट इज अ वेरी नाइस प्ले। और मुझे अपनी स्टेट का एक खेल है हॉकी, जो मेरे बिल्कुल दिल के करीब रहने वाला खेल है, जिसे मैं खेलता तो नहीं हूँ, लेकिन जब भी कोई भी मैचेस होते हैं रांची में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम द रांची बॉयज, ये मेल और फीमेल की टीम बनती है तो इंडिया टीम में कुछ ना कुछ खिलाड़ी रहते हैं। तो मुझे हॉकी बहुत पसंद लगता है। बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो हमारे मित्र हैं, मनप्रीत सिंह, अर्जुन हल्लप्पा, दीपक तिर्की, जो इंडियन हॉकी प्लेयर्स हैं, जो कैप्टन भी रह चुके हैं। तो काफी अच्छा लगता है हॉकी मुझे, लेकिन मैं खेल नहीं पाया क्योंकि वो काफी फास्ट गेम होता है। मैंने कोशिश भी की बट मुझे लगा ये मेरे लिए नहीं है। बट आई लाइक टू दिस क्रिकेट इज ऑल्सो। जी बिल्कुल। So with this, I think we come to an end with our chat show. Please don't go anywhere. We या have a small token of appreciation for you. So, या Anand sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, So, sir, so we would like to थैंक यू। facilitate you with this certificate. Same certificate will be mailed over to या you या over the mail, sir. Thank या you या so much, sir, for coming on our invitation to the chat show, and it was a nice meeting, sir. Having talked to you. ओके ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, Thank you so much, sir. ओके, थैंक यू। Thank you so much, sir.